दुनिया के बाकी देशों मुकाबले भारत दे विच कोरोना का सब तो वध खतरा है। लगातार कोरोना के केस भारत दे विच वधदे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटिया दौरान 3,48,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जबकि एक दिन के अंदर रिकॉर्ड मौतां दर्ज की गई ने। उधर अमेरिकी डॉक्टर एंथनी फॉसी के वलों दावा किया गया कि भारत के वलों गलत धारावां धारण की गई सी, जिस दे कारण देश के विच कोरोना ने पैर पसारे ने। 3,48,000 होर केस। यह आंकड़ा भारत के विच एक दिन के कोरोना केसां दा है। एक दिन के अंदर 4205 लोगों की जान चली गई। देश के विच कोरोना का कहर रुक नहीं रहा। हर दिन मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड पद्धर से वध रहा है। वायरस हुण तक 2.5 लाख तो ज़्यादा लोगों की जान लै चुकिया है। 24 घंटिया दौरान 3,48,421 केस भारत के विच दर्ज किए गए हैं। एक दिन के अंदर 4205 लोगों की जान चली गई। एक दिन अंदर मौतों की संख्या सब तो वध है। पहला 7 मई को 4187 लोगों की जान चली गई सी। 3,55,000 लोग कोरोना तो ठीक भी हुए हैं। 37,04,000 भारत के विच एक्टिव केस हो चुके हैं। देश के विच 2,33,40,000 लोग पीड़ित हो चुके हैं। 2,54,197 लोगों की जान चली गई है। भारत के विच कोरोना वैक्सीन का काम भी जोरों से चल रहा है। 17.5 करोड़ तो वध लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। Based on what WHO knows so far, discussions with many experts globally, vaccines, therapeutics, and diagnostics continue to be effective against the B.1.617 variant, which WHO has now classified as a variant of concern owing to evidence of increased transmissibility. There has been an increasing rate of detection of this variant, along with an increase and a surge of COVID-19 cases in parts of India. However, the relative contribution of this variant in the rapid increase of cases in the country remains unclear. Whether it is the original COVID-19 virus or its variants, the goal is to stop transmission. All of us can protect ourselves by practicing the 3 W's. Wearing masks correctly, covering the nose, mouth, chin, washing hands, and watching our physical distances from each other. And always applying the 3 C's. Avoid crowded places, close contact settings, and confined and closed areas. अमेरिका के रोगों के माहिर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भारत की नीति खिलाफ दावा किया। फॉसी ने कहा भारत ने गलत धारणा बनाई कि देश के विच कोरोना महामारी का प्रकोप समाप्त हो चुका है। Well, I think one of the important things is don't ever underestimate the situation. You know, the reason that India is in such dire straits now is that they had an original surge and made the incorrect assumption that they were finished with it. And what happened, they opened up prematurely and wind up having a surge right now that we're all very well aware of is extremely devastating. That's the first thing. The second thing is preparedness with regard to public health preparedness, which we, as a lesson learned for future pandemics, have to realize that we need to continue to build up our local public health infrastructure, which over the last decades we have let to actually, in many respects, go into disarray, likely because of our successes in controlling so many diseases. The other lesson that's learned, Madam Chair, is that this is a global pandemic that requires a global response, and we need to pay attention to the responsibility that we have, not only for our own country, but to join with other countries to make sure that we have the access to interventions, particularly vaccines, throughout the world. Because if it continues to have dynamics of virus anywhere in the world, we have a threat here in the United States, particularly with variants. And you know, there's one variant in India that is also a new variant, number 617B617. So those are just a few of the lessons that I believe we can take from what's going on in India. भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। कोरोना ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। So
consultation with our virus evolution working group and our epi teams and our lab teams internally, there is some available information to suggest increased transmissibility of B1617. There is a preprint that is out. So this is a paper that has not undergone peer review, and it's on a limited number of patients, suggesting that there is some reduced neutralization. And as such, we are classifying this as a variant of concern at the global. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5386 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 32 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Care will be pausing the rollout and administration of the first or initial doses of AstraZeneca vaccine at this time. This decision was made out of an abundance of caution due to an observed increase in the rare blood clotting condition known as vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, linked to AstraZeneca vaccine, or as we use VITT, VIT for short. As of May 8th, 651,012 doses of the AstraZeneca vaccine were administered with a rate of VITT of 0.9 per 100,000 doses administered. 202,873 doses of the Covishield vaccine were administered with a rate of VITT of 1 per 100,000 doses administered. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।